welcome, welcome, hearty welcome. Welcome, welcome, hearty welcome. Welcome, welcome, hearty welcome. Om Shanti. Welcome. Thank you. You are most welcome. We are very happy to see you with us. And thank you for the invitation. And it is our fortunate that we will good evening to everyone. Listen to the experience with National Coordinator for Spain. Sister Savita from Madhuban is going to translate your class. And please you can start. Savita Ben, आपका भी बहुत स्वागत है. हाँ जी, Om Shanti. Hi, Savita. Om Shanti, how are you? Fine. Yeah, we were in the design. And confined in the lockdown. Yeah, we were in the design team in NCCC retreat. Yes, I remember. Yeah. Okay, brother, you may start. So I'm going to share a little bit my story, and yes, some experiences and the type of effort that I do. Also some experiences about that. Is it okay? Yeah. So I came to Baba in the year 86. This means like 34 years ago, in a city of Spain called Barcelona. मैं 1986 में ज्ञान में आया और स्पेन में एक सिटी है बार्सिलोना करके, वहां से मुझे बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ. At that time, Barcelona was the city with the only center in the whole of Spain was in Barcelona, and it was simply a flat with Baba's room and a hall of meditation, but just a flat in the whole of Spain. That was the year 86. तो जब मैं 1986 में बार्सिलोना स्पेन में ज्ञान में आया, वहां पर एक ही सेंटर था पूरे स्पेन देश में, और वहां पर एक छोटा सा फ्लैट में बाबा का सेंटर चलता था. बाबा का कमरा था, क्लास हॉल था, और कोई सेंटर नहीं थे वहां पर, केवल एक ही सेंटर था. So my brother, my Lokik brother, who is also a Lokik now, he's also a BK, and we were living together in a flat next to our parents' house. तो लौकिक ब्रदर भी थे साथ में, वो भी अलौकिक ब्रदर भी बन गए हैं. हम साथ में रहते थे, उनके पेरेंट्स के माना एकदम नजदीक एक फ्लैट में रहते थे दोनों ही, ये और इनके भाई. At that time, our age was 25. I was 25-year-old. My brother Enrique is called. He was 27 years old, and we were practicing many things. We were looking for meditation courses. We were practicing Buddhist meditation. We were practicing different types of diets like macrobiotics. तो उस समय जैसे मैं 25 साल का था, मेरा भाई जो था वो 27 साल का था. हम लोग जैसे बहुत ही चीजों को प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशन कोर्स, बुद्धिस्ट का मेडिटेशन. ऐसे इनको था कि कहाँ ना कहाँ हम थोड़ा मेडिटेशन वगैरह सीखें, इसलिए एक भाई ब्रदर बिल और उनके भाई दोनों मिल करके कुछ ना कुछ कोर्सेज जैसे सीख रहे थे. It was then that one friend, he knew the Brahma Kumaris, and he insisted us that we should visit the center. We were thinking we do so many things. We were not that interested at that time, but finally we went to visit the center. And when the first day I went, it was Janamastami. Oh, okay. तो जब ये इनका एक फ्रेंड था, उन्होंने बोला कि ऐसे आप लोगों को मेडिटेशन वगैरह सीखनी है, तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, आप वहां पर जाइए. तो इन्होंने सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है करके. फिर ये दोनों भाई मिल करके फाइनली सेंटर पर पहुंचे, और जब ये लोग सेंटर पर पहुंचे वो जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था. That was my first day in the center, and I remember the sisters wearing sari. At that time, what was interesting is that sisters and the center were really exactly like in Bharat. The pictures of Bharat, they were wearing saris,
and there were no chairs. Everything was on the floor. So the feeling was that you were in an Indian place. ओके। तो जब ये सेंटर पर पहले दिन गए, वहां बहनों से मिले, बहनों ने सफेद साड़ी पहना हुआ था। इनको ऐसा लगा कि ये तो पूरा इंडियन का सिस्टम ये लोग फॉलो कर रहे हैं। बहनों ने सफेद साड़ी पहना हुआ था, पिक्चर्स वगैरह जो चित्र वगैरह है कोर्स के वगैरह, तो वो भी जैसे भारत के चित्र जैसे दिख रहे थे। वहां चेयर्स नहीं थे, सब जमीन पर बैठे हुए थे। सबको देखकर इनको ऐसा लगा ये तो कुछ भारत का ये लोग ट्रेडिशन जैसे फॉलो कर रहे हैं। Even the pictures were the original pictures of Bharat. That you remember that picture of the soul with a skeleton, you know, in a car. All those pictures that are now are quite old. Those were the pictures that were there. So it was very interesting for us. तो जब ये गए तो वहां पर जैसे आत्मा का परिचय जब हम देखते हैं तो वो जो चित्र है ना, आत्मा है, उसके बाद स्केलेटन, केवल जो हड्डी का वो चित्र दिखाते हैं। तो सारा देखकर इनको ऐसा लगा, थोड़ा सा अजीब सा लगा, और देखा कि ये तो पूरा भारत का जैसे सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। So I remember that they were sharing some knowledge about Janamastami, and then we had some meditation, and then at the end they said that it was a day of celebration, and they put some Hindi music, and the experience I remember is, I don't know why, but I began to dance with all of them. I was feeling very happy in the atmosphere. तो जब ये क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था, त्योहार है, सेलिब्रेशन तो होता ही है, तो मेडिटेशन वगैरह हुआ, लास्ट में उन्होंने म्यूजिक चालू किया, तो भाई को जो ब्रदर है वो भी जैसे डांस करना जैसे शुरू कर दिया, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगा वहाँ का वातावरण, वहाँ का खुशी, और उन्होंने जो लास्ट में गीत भी बजाया तो ब्रदर डांस करना शुरू कर दिया। I imagine that Baba gave me some experience of happiness. And then what was interesting is that they must have been felt that we were really like seekers, no? And they invited us directly to listen to the Murli without taking the course. Not the course, direct No. to Murli. They invited you. Direct to Murli. Oh, And then okay. we were having the lessons of the course in 15 minutes every day after the Murli. तो इन दोनों को देख के बहनों को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने बोला कि अब डायरेक्ट मुरली सुनने आ जाओ। उन्होंने कोर्स के लिए भी इनको बुलाया नहीं, तो ये लोग जैसे मुरली सुनने जाना शुरू कर दिया, और हर रोज मुरली के बाद इनको जैसे 15-20 मिनट का कोर्स बहने देती थी। So I don't know exactly why they decided this, but I was in the Murli, and I remember that I couldn't understand much of Baba's language, but I was feeling very nice feeling of the atmosphere. I was enjoying being with the other Brahmins. There were not so many, maybe 6 or 8. And then at the end, one of the sisters in charge, gave me the lessons of the course. Every day, 15 minutes, one lesson. तो जैसे मुरली द्वारा इनकी जैसे जर्नी शुरू हो गई, फिर ब्राह्मणों की कंपनी वगैरह अच्छा लगा। ज्यादा तो बाबा के बच्चे नहीं थे, लगभग 6-8 थे, और एक सिस्टर थी वहां पर, उन्होंने इनका कोर्स कराना शुरू कर दिया। Which sister was that? Do you remember her name? Yes, well, she's a Spanish sister. Her name is Kiran. किरण, ओके। एक स्पेनिश की वहीं की बहन है सिस्टर किरण, उन्होंने इन दोनों का कोर्स कराया। She's now in a different role. She's not anymore. ओके, उनका भी रोल जैसे चेंज हो गया है, लेकिन जिन्होंने इनको ज्ञान दिया उनका नाम सिस्टर किरण था। As we say, she has taken some holidays now. Okay, good. So she was giving me the course, and I remember that I was not so attracted by knowledge, but much more by the experiences of peace, of silence. I used to enjoy a lot the meditation. And for instance, I had many bhakti ideas still. And I remember that when they taught me about God, I began to debate that this is not possible. God cannot be a point of light. I told them. जैसे, yeah, okay.
जैसे ज्ञान बहनों ने इनको सुनाना शुरू कर दिया, इनको ज्ञान तो इतना अच्छा नहीं लगा कि शांति की बातें सुना रहे थे, साइलेंस की बातें सुना रहे थे, वो इनको अच्छा लगा। लेकिन इनको परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा निराकार हो सकता है, वो बात जची नहीं। इनको बाकी सब बातें, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप जो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो बात इन्होंने नहीं माना शुरू में। Because I had read many things, and I told the sister, this is not a logical idea. God is everywhere. I told the sister. I told her quite forceful. God is इन्होंने everywhere. सिस्टर को कहा बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन परमात्मा परमधाम निवासी ये नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं मानता हूँ कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। So I was so firm that she became silent and she didn't insist. But I still continue coming for the Murli, and I don't know exactly what magic Baba does, but I was feeling very well there. The atmosphere, the company, I was having very good experiences. हाँ, जैसे हम कोई ज्ञान की पॉइंट हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन काम तो बाबा करता है। इनको अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, बाबा ने मैजिक कर दिया और ब्राह्मणों की कंपनी अच्छी लगने लगी। ऐसे करते करते सेंटर के कनेक्शन में आए, ऐसे इनकी जर्नी जो है वो शुरू हो गई। And I remember that slowly, I was having every time more enthusiasm. I remember that I was living in the other side of the city, and we used to go with my brother with a motorbike. We used to go for Amrit Bela. After Amrit Bela, we went back to our home, and then take shower, and then going back to the center for the Murli. Really, a lot of enthusiasm. धीरे धीरे जैसे इनको ये अनुभव होने लगा कि इनका उमंग उत्साह बढ़ रहा है। बाबा का जो सेंटर था वो जो सिटी के दूसरे साइड पे था, फिर भी ये मोटर बाइक पे अमृत वेला करने जाते थे इनके भाई के साथ। फिर वापस आकर के फ्रेश होकर के फिर मुरली के लिए भी जाते थे। तो वो सब याद करके इनको अभी कितना वंडर लग रहा है। And what I feel is that Baba, I used to have from time to time very special and powerful experiences, especially in yoga. I think that was the way that Baba made me a Brahmin through very special experiences at the beginning. I felt that I need to keep this in my life. मुझे जैसे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे मेडिटेशन जब मैं करता था, मुझे ऐसा लगता है तभी बाबा ने मुझे जैसे चुन लिया, पकड़ लिया। तो ये जो अनुभव मुझे होने लगे, इसके आधार पर ही मैं बाबा का पक्का बच्चा बन गया। And so, like this, I was understanding more the knowledge, and I became engaged in service. And that year, 86, you will probably remember this Abhyak Murli of this Sunday, where Baba was talking about the messengers of peace. That was the International Year of Peace, 86. तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे बाबा की सेवाओं में भी इन्वॉल्व होने लगा। आप सभी को याद होगा 1986 में जो बाबा ने मुरली चलाई, जो अभी हमने लास्ट संडे हमने सुना, उसमें बाबा ने पीस मैसेंजर, शांति दूत का जैसे बाबा ने टाइटल दिया, और वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस था, शांति के साल के रूप में उसको मनाया गया था। तो उसी साल में जैसे मैं पक्का बच्चा बना और धीरे धीरे सेवाओं में भी, बाबा की सेवाओं में बहुत ही इन्वॉल्व होने लगा। And I could see that it was amazing how many things, service programs were done with a very small family, and big programs, concerts on the street. It was amazing how Baba was helping us to do anything, and there was a lot of service. धीरे धीरे जैसे मैं देखने लगा कि बाबा की सेवाओं में भी कितना वृद्धि होने लगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स, कॉन्सर्ट्स वगैरह करने लगे, तो कैसे बाबा की मदद की वजह से, बाबा की मदद से कितनी सेवाओं में वृद्धि होती गई, ये मैंने अपने आंखों से देखा और बाबा की मदद को बहुत मैंने अनुभव किया। And 2 years, I forgot to say that after 3 months, when I came to Baba, to the center, after 3 months, I went to Madhuban. In just 3 months, I visited Madhuban for the first time in December 86.
तो मैंने बस ज्ञान में आने के 3 महीनों में ही मैं मधुबन चला गया 1986 दिसंबर में मैं पहली बार मधुबन गया. So you went for Baba's meeting? Yes, Baba's meeting was the 31st December. बस ज्ञान में आने के 3 मास के बाद ही मुझे छुट्टी मिल गया मधुबन जाने का और मैं बाबा से मिलने के लिए मधुबन चला गया दिसंबर 1986 में पहली बार. And really, I keep in my heart, I love all the places of Madhuban, but because my childhood was in Pandavan, the deepest experiences I have from Madhuban are from Pandavan. मुझे वैसे मधुबन के बाबा के सभी स्थान अच्छे लगते हैं, ज्ञान सरोवर, शांतिवन वगैरह, लेकिन मेरे जो ज्ञान के बचपन के दिन थे वहाँ जो अच्छे अच्छे अनुभव हुए वो सब पांडव भवन में हुई, तो इसलिए मुझे पांडव भवन बहुत अच्छा लगता है. Just as something a little bit funny, that when I met Baba the 31st of December, I was very new, and so every Madhuban Niwasi that I was speaking was telling me, God is coming today, God comes. So I had such an incredible level of expectation. तो जैसे इनको 31 दिसंबर 1986 की बात है, तो आज सभी बोल रहे थे कि आज परमात्मा का अवतरण का दिन है, परमात्मा का मिलन हम सब करेंगे. ये बहुत ही जैसे एक्साइटेड थे कि अच्छा हम परमात्मा से मिल रहे हैं आज करके. They used to tell me with so much enthusiasm that God is coming, it's incredible, no, God is coming. So when I was waiting for the meeting, I was thinking, I don't know, that maybe we would see lights coming from up above or something incredible. सब बोल रहे थे कि आज परमात्मा का अवतरण का दिन है, तो भाई को भी बहुत सारा उमंग उत्साह था और ये सोचने लगे कि परमात्मा का अवतरण माना शायद ऊपर से कोई लाइट वगैरह आता होगा, ऐसे सोचने लगे. I had such an incredible level of expectation that when Bab Dada began to talk on the stage, I was feeling, that's all? God has already come? तो इनको था कि शायद कोई लाइट आएगा ऊपर से, इनको मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा का अवतरण होता है. तो जैसे बाबा का अवतरण हो गया, बाबा की प्रवेशता हो गई गुलजार दादी के तन में, तो इनको लगा अच्छा बस इतना ही, परमात्मा आ गए क्या, ऐसे थोड़ा इनको थोड़ा जैसे सरप्राइजिंग जैसे लगा. I was certainly surprised by the way in which God comes in Dadi Gulzar. Of course, I had a special experience, but I think I was waiting for something more spectacular. No? तो बस निराकार बाबा कैसे आते हैं पता ही नहीं चलता है ना, लेकिन इनको दूसरी ही बातों का जैसे एक्सपेक्टेशन था कि परमात्मा माना ज्योति आएगा ऐसे वैसे, लेकिन जैसे बाबा का अवतरण तो बहुत सूक्ष्म चीज है, देख के इनको थोड़ा सा वंडर लगा. But then you may know that night, the 31st December 86, I've heard always that it was the longest time Bab Dada has ever been in Dadi Gulzar, no? So from what time to what time Baba was there? Like, the longest time. Bab Dada stayed until I think 11 of the next day. It was like the record. What time Baba came? Previous evening? What time it was? He came as always, no, at 7, I think. Oh, okay. But they told me that this was the time that Bab Dada stayed for the longest period in Dadi Gulzar. Yeah, okay. Yeah, तो ये भी एक बहुत वंडरफुल बात है कि 1986 दिसंबर 31 के दिन जो बाप दादा का अवतरण हुआ था, बाप दादा का वो जो पार्ट था वो लॉन्गेस्ट था, माना बहुत लंबे टाइम दादी गुलजार के तन में बाबा थे. 7 बजे आज शाम को बाबा आए और नेक्स्ट डे 11 बजे तक बाबा गुलजार दादी के तन में थे. So Baba met with 1,000 Brahmins, and he met them personally. I had a personal meeting, short, it was a short meeting, but he met with everyone throughout all the night. Longest tha. So I had my personal meeting with Baba, and I remember his blessing was
that तो बाबा by लगभग 1000 बाबा के बच्चों से मिला बाबा ने मिलन मनाया और he asked me if I was happy and that I should move forward and become powerful. सविता बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Savita. हाँ, तो फिर बाबा ने उनको वरदान दिया कि आगे आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए। हाँ, ब्रदर प्लीज कंटिन्यू। So it was a very, very special experience to meet Baba. I felt that power. I felt the incredible energy. But even my next time in Madhuban was even better experience, and it was the last year it was the 88, and it was the last year for personal meetings. I remember also that. So I was very fortunate to have my personal meetings with Bab Dada. And after that, you will remember we had these group meetings, but it was always very, very special in Om Shanti Bhavan. तो वो मीटिंग तो बाबा से उनकी बहुत अच्छी रही, बाद में 88 में भी आए और वो मुलाकात और उस मुलाकात के अनुभव भी बिन भाई के बहुत अच्छे रहे। So now I will make it. This was just the most powerful experiences were at the beginning, and just to explain a little bit my trajectory. After 4 years, I went to open the first center in Canary Islands. I don't know if you know Canary Islands. It's near Africa. तो ये शुरुआती बहुत अच्छे अनुभव उन्होंने हमें सुनाए। बाद में उन्होंने जो आइलैंड का नाम दिया, वहां पर उन्होंने पहला वहां पर सेंटर खोला। And I still remember how we were so enthusiastic for service, because I went alone. I have just one contact, a person to contact there, and I went with a little bit of money, and then I found a job, I rented a flat. It was incredible how Baba was helping to move things quickly everywhere. Okay. तो मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे, मैं एक ही व्यक्ति को जानता था, लेकिन मैं बहुत उत्साही था सेवा के लिए और बाबा की बहुत मदद इस सेवा में मुझे रही। So I was starting service there. I was in Canary Islands during 4 years. And then I went back, after that, I went back to Barcelona again, but the center state in Las Palmas. सरिता बहन, आप कर सकते हैं ट्रांसलेट? आपको आवाज आ रही है? जी जी, ये थोड़ा आप कर लीजिए, मैं पूरा सुना नहीं, मैं नेक्स्ट सेंटेंस से करूंगी। हाँ, तो वो तो रिपीट करेंगे। ब्रदर प्लीज रिपीट दिस सेंटेंस। No, I was saying that from the year 90 till the year 94, I was in Las Palmas. I opened the first center there. We were very fortunate. Daddy Gulsar came to that center. Daddy Yankee came to that center too. And then in the year 94, I went back to Barcelona, my initial place, and I stayed there until 2012. When I went, yes, long time, huh? in Barcelona, yes. Yeah. तो जैसे लॉस पाल्मस करके वहां पर एक जगह है स्पेन में, वहां पर भाई गए 94 की बात है, तो वहां पर जाके इन्होंने सेंटर खोला और बहुत लंबे टाइम तक वहां पर रुके। फिर वहां पर दादी गुलजार जी का जाना हुआ, दादी जानकी का जाना हुआ, तो बहुत ही लकी अपने आप को महसूस करते हैं। और फिर 2000 फिर बार्सिलोना वापस आए 2012 तक लगभग, जैसे वहां पर रह के इन्होंने सेवाएं की। I've always, and then from 2012 until 2015, I went to Las Palmas again. And since 2015, I'm in Madrid, the capital of Spain. तो 2012 में वापस से लास पाल्मस गए, वहां पर 3 साल रहे, फिर वहां से मैड्रिड गए जो स्पेन देश का कैपिटल सिटी है। So now in Spain we are around 180 Brahmins, which for a European
country is quite a very good number. It's not like in India, but for Europe, it's very good result. तो अभी पूरे स्पेन देश में लगभग 180 जितने बाबा के बच्चे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में, ऐसे देश में जहाँ पर अलग कल्चर होता है, सब कुछ अलग होता है, तो 180 बाबा के बच्चे, 180 बाबा के बच्चों का जो नंबर है बहुत ही अच्छा नंबर है उन देशों को जब हम कंपेयर करते हैं तो. And since 2009, I am part of the national coordination team. At that year, there was this creation of the national coordination team for service. या भारत विदेश में आप सबको मालूम होगा कि एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग टीम होता है जिसके आधार पर जैसे सेवाएं होती है. तो 2009 से नेशनल कोऑर्डिनेटिंग टीम बना, तो भाई भी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग टीम का एक हिस्सा है. So now a little bit regarding my efforts, what I saw, I have explained a little bit the experiences of the beginning, but also after not long time, I was aware that there was this battle with Maya here also. तो अभी मैं थोड़ा अपने पुरुषार्थ के बारे में शेयर करना चाहूंगा. जब हम ज्ञान में आते हैं शुरू में तो पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में स्लोली माया का जो युद्ध है उसके बारे में पता चलता है. ऐसे ही मुझे भी ज्ञान में आने के थोड़े साल के बाद माया के बारे में पता चला. In a sense that I think as every Brahmin experiences, at some point certain sanskars emerge that you need to work on them, because these sanskars create sometimes clashes with other BKs in service, especially. Yeah, very true. Very true. Everyone faces this. ये सभी को जैसे अनुभव होता ही है, क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं थोड़े टाइम के बाद माया का प्रभाव शुरू होता है, फिर बहुत पुराने संस्कार हमारे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जिसके ऊपर हमको वर्क करना होता है, जिसको परिवर्तन करना होता है, जिसकी वजह से सेवाओं में भी विघ्न आते हैं, ब्राह्मणों के साथ क्लैशेस भी हो जाते हैं. Because I remember at the beginning, because Baba was sustaining the soul and giving experiences, that I was thinking, but this is so easy. To become karmatit is nothing. This is nothing, I was thinking. So, recently one brother shared experience. He told that when he came to Baba's knowledge, he was thinking, I'll become karmatit in 3 months. Exactly. Now we finished 20-25 years with Baba, but hasn't become karmatit as yet. That was my feeling, and then I slowly I realized that it was not exactly like this. तो ये भाई को भी जैसे ज्ञान में शुरू में आए तो इनको लगा मैं बहुत ही जल्दी कर्मातीत बनूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ने लगे तो पता चलता है कि कर्मातीत बनना कितना बड़ा और लंबे टाइम का पुरुषार्थ वहां पर जैसे जरूरत होती है. I think this is why Baba values so much his children, because he knows that we are facing the most difficult to face. We are facing ourselves. तो बाबा को जैसे पता है, बाबा इसीलिए अपने बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है कि माया का भी कितना प्रभाव है और कैसे बच्चे बहुत ज्यादा पुरुषार्थ में लगे हुए हैं. इसीलिए बाबा को पता है सब कुछ, तो इसीलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. And this is a long journey, so you will have to face each and everything that is a weakness or a defect inside yourself, and you have to remove that with Baba's help, of course. Yeah, very true. Such sanskars also come sometimes which were not even in when we were not having Baba's knowledge, like that type of bad sanskars also come out, right? They were very hidden in the subconscious, right? Yeah. तो जैसे हम अनुभव करते हैं कहीं कहीं कभी कभी ऐसे संस्कार हमारे बाहर आ जाते हैं जो ज्ञान के पहले भी नहीं थे. तो ये बहुत लंबी हमारी जर्नी है. हम जानते हैं कि हमारे अपने में बहुत कमजोरियां हैं जो हमको पुरुषार्थ करके बाहर निकालना है, क्योंकि वो जो बहुत बुरे संस्कार थे वो अंदर कहीं सबकॉन्शियस में छिप गए थे. तो बाबा की मदद से, ज्ञान की मदद से, पुरुषार्थ के आधार से उन सभी संस्कारों को हमको परिवर्तन करना ही है. That explains why now I am with white hair, not much hair, because
We have to face many things. तो अभी आपको जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे सारे जो बाल है वो सफेद हो गए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल का रास्ता भी पुरुषार्थ सेवाएं करना भी इजी नहीं होता है कभी कभी। When I came to Baba, the hair was black. Just imagine so much change. जब मैं बाबा का बच्चा बना, आप सोच सकते हैं कि मेरे जो सारे बाल थे वो काले थे, अभी पूरे जो मेरे बाल है वो सफेद हो गए हैं। But in reality, this was just a joke. But the reality is that I feel very, very, very fortunate of this wonderful life, because what I've seen is that in this life there is learning and growing at every step, even though sometimes can be tough, sometimes from time to time. But there is तो always लेकिन learning and growing. या जो भी है, लेकिन ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। कितना अच्छा ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, हम सीख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूँ। And yes, also there are different periods, no? In your Brahmin life, there are periods where everything flows more easily, and sometimes there are periods where you face some obstacles. But I think this is not for me. This is for everyone, and so that's part of the journey. तो सभी को ब्राह्मण जीवन में विघ्न आते ही हैं, हम सभी अनुभव करते ही हैं, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है, ये सब हमको फेस करके आगे जाना ही है। I have been also since the beginning, since the first year, I became a teacher and giving courses and lectures, and I think also this has helped me a lot to reflect and to churn on the knowledge, churn the spiritual knowledge. And this is, I enjoy very much this, to bring, what I enjoy very much is to translate Baba's knowledge that is so deep and powerful for the people, and for every soul, how to benefit them through that. तो जैसे मैं ज्ञान में आगे बढ़ा, सेवाएं करना मैंने शुरू कर दिया, तो बाबा के कोर्सेस भी मैं कराता था, लेक्चर्स भी देता था, जिसके आधार पर जैसे बाबा के ज्ञान को चिंतन मंथन करना भी मेरे लिए सहज हो गया। तो ये मेरा अनुभव है कि जितना जितना हम सेवाएं करते हैं, बाबा के ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उससे हमारी भी जैसे उन्नति हो जाती है। For instance, this is what I notice is that in India, you can talk very directly because there are so many ideas, no, so many different religions even. So you can speak very openly and directly Baba's Gyan. And in Western countries, for instance, in Spain, we can talk about God, but we have to be a little bit more, we have to, certain aspects of the cycle, and we have to be a little bit more soft at the beginning, or give them a little bit more in essence, but not so much detail. तो जैसे भारत में हम देखते हैं कि डायरेक्ट हम बाबा के जैसे डायरेक्ट हम ज्ञान सुना सकते हैं, डायरेक्ट परमात्मा शिव के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर दूसरे देशों में ऐसे नहीं कर सकते। हमको एसेंस जो होता है, जो ज्ञान का सार होता है, इनडायरेक्टली हम उनको ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम बाबा का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। So during this period, I've always, one of the things that I've always enjoyed is especially Amrit Bela. Amrit Bela, I think, has sustained me, of course the Murli too, but I think Amrit Bela is what has given me like the foundation of experiences to move forward. I consider it very important, no, to keep my attention in Amrit Bela. तो ये जब मैं ज्ञान में आया, मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी वो अमृत वेला है। उसके साथ साथ मुरली भी मुझे अच्छी लगती थी। हम सब जानते ही हैं कि इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा जो साधन बाबा ने हमको दिया है वो यही है अमृत वेला। उसके ऊपर भी मैंने बहुत अटेंशन हमेशा रखा है। And now just to share a little bit about this year that is a very strange year, no, for everyone, no? Yeah. Due to the COVID.
It's Yes, a yes. very interesting year, and I would say, in my experience, I'm enjoying a lot this year because it has helped us to move away from so much action, no? Action, because sometimes I become too engrossed in action, so many actions, and sometimes the attention on yoga or spiritual effort becomes a little bit less, no? हम्म तो जैसे मैं अनुभव करता हूँ जो इस साल जो बहुत हमारा बीता कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही इससे हमको सीखने को मिला। नहीं तो हम बहुत भागते थे, लेकिन समय के हिसाब से कैसे हम अपने को एडजस्ट करें, जब रुकना है तब रुकना है। तो सारे नई नई बातों को जैसे मैं इस साल मैंने बहुत ही अलग तरीके से अनुभव किया। So suddenly, not suddenly, but this for several weeks already, and in the lockdown in April, no one is coming to the center, so we are only doing online things. हम्म जैसे सभी ने अनुभव किया, अप्रैल अगर मार्च अप्रैल मई के बाद हम देखें जब बहुत ही सीरियस सिचुएशन था, तो ऑल ऑफ सडन सभी जो सेंटर पर आते थे उनका सेंटर आना बंद हो गया। तो हमने जैसे ऑनलाइन में ही सेवाएं काफी सारे हमने भी किया। And so this gives me more space to reflect, to check, to pay more attention on the self. And I think that Baba is giving us all of us a special opportunity. If we haven't been able to do the right effort for any reason, so now is the time, I feel, to put everything right and to do intense effort, as Baba says. जैसे बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो मैंने इसे लिया, जो मुझे लॉकडाउन में टाइम मिला, मैं अपने आप को देखूं, अपने आप पर वर्क करूं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करूं। तो जैसे बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करने का अभी टाइम है, तो जो भी मुझे टाइम मिला उस टाइम में मैंने अपने आप को यही प्रिपेयर किया कि जो बाबा चाहते हैं वो पुरुषार्थ हम करें। And another effort that I think for me is very important. I don't know why, but for me it's very essential to keep an atmosphere of harmony among souls, especially among the residents of the center, but with Brahmins in general. I think it's very important to avoid as much as we can unnecessary clashes or whatever. No, I try to pay attention to, as Baba was saying the other day, to create an atmosphere of well-being, and so that souls are content. Of course, that's impossible always, but that's the intention. तो मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि बाबा के जो बच्चे जो संबंध संपर्क में आते हैं उनको जितना हो सकता है हम संतुष्ट रखें, उनका पुरुषार्थ, उनका जो वेल बीइंग है वो अच्छे से रहे, इस पर भी हमारा अटेंशन होना चाहिए। और जितना हो सकता है जो आपसी हमारा मतभेद हो जाता है, कोई भी बात में क्लैशेस हो जाते हैं ब्राह्मण परिवार में आपस में, उन सभी बातों को जितना हो सकता है हम अवॉइड करें तो अच्छा है। Because, as I was saying, I think that's very important to create that powerful atmosphere at the center, to have good relationships, and this inspires me to do a lot of effort, because I need to become more flexible, more accepting, more tolerant, and still I need to improve a lot in all of that. But this aim helps me a lot to develop virtues. या तो जैसे भाई का लक्ष्य रहता है कि हम सेंटर पर रहते हैं तो सबके साथ हमारा संबंध अच्छा हो, जिससे उसके लिए हमको सभी के स्वभाव संस्कार को स्वीकार करना पड़ता है, वो जो है जैसे हैं सहन करना पड़ता है। तो मेरा हमेशा ज्यादा फोकस रहता है कि मैं सबके साथ संबंध अच्छा रखूं, ताकि तभी हम ब्राह्मण जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, समर्पित जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, सेवाओं को भी एंजॉय कर सकते हैं। And nowadays, we have received this message of sending vibrations to Madhuban, and I feel very inspired, because I always feel I've received so much from Madhuban,
And now that Madhavan is like needs also our subtle cooperation, I really enjoy this meditation of sending vibrations and love to Madhavan. तो मुझे जब ईमेल आया था कि मधुबन के लिए भी हमको योग करना है, मैंने मधुबन से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ प्राप्तियां पाई है। तो जब मुझे मधुबन के लिए योग करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मधुबन में प्रकाश भेजने की जो सेवा मिली। Finally, I would say, and maybe there's a little bit of space if you want me to share about something, I would say that we can see that the world is very unstable, in a very delicate situation, and more than ever, we need to give that a subtle support. But we have to finish every problem or every conflict we have inside ourselves. Now we really have to get rid of all of that, because we need to be available for unlimited service. जैसे अभी हम देखते हैं कि दुनिया में कितना See? Savita, I think your voice is not clear, no? Due to our internet is चल रहा है, बहुत ज्यादा हमसे जो है वो बातें हो रही है, इसीलिए हमारा our internet is unstable. That's the problem. Okay. No problem, brother. Please go ahead. So it's really my pleasure to be sharing all of this. Of course, there are so many things to share, but would you have any? सविता बहन, आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है, वो आवाज। Am I audible now? हाँ, अभी हुआ। I was saying that would you like me to share any specific thing or something about Spain, about service here? Yeah, sure. Anything you would like to know? Yeah, please share something, Spain, the culture of Spain, and whatever you have to Spain. Share, whatever. So Spain is a country that it's in fact quite Christian. So there is quite a lot of religion, especially in the south of Spain, many Christians. And so you can talk about God in Spain. Also, there are people that don't like to hear about God. There are both types. But it's not so difficult as UK. Always Sister Genti says that UK is very difficult to talk about God. But here in Spain, you can talk about God. Okay, UK जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ क्रिश्चियंस ज़्यादा है, लेकिन जैसे UK में गॉड के बारे में बोलना जितना टफ है, जैसे जयंती बहन कहती है, ऐसे इतना टफ स्पेन में गॉड के बारे में बोलना नहीं है, बाकी वो क्रिश्चियन कंट्री है. And people in Spain are quite warm, they have quite an open heart, and they are quite kind. And I would say in certain areas, I feel some connection with Barat, especially in the south of Spain. Okay. I don't know if you have heard the flamenco, those singers of flamenco. Yeah. They seem like singers of Barat. Okay. तो जो भाई हमारे बिल भाई कह रहे हैं कि स्पेन के लोगों का भारत से भी कनेक्शन है, फ्लेमिंगो करके जगह है, तो वहाँ के लोगों का खास एक प्रकार से, और साउथ स्पेन जो है उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, और वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी उष्मा भरे मना बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव है. इन शॉर्ट इनका भाव ये है कि स्पेन के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं. And every time, more and more, people are very interested in meditation and spirituality. Every time there is more interest. वाह. So जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, एवरी टाइम, तो लोगों में ये मेडिटेशन के बारे में इनको इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं.
Even sometimes when we stream through YouTube meditations and some lecture and meditation, we have had even 1,000, 1,400 people listening. People are very interested. Is it 1,400 live streaming? Sometimes, not always. ग्रेट Sometimes. ग्रेट ग्रेट। तो जब YouTube पे जैसे हम लोग यहाँ लाइव करते हैं, वो लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो कई बार 1000, कई बार 1400 तक लोग जुड़ जाते हैं। ये बताता है कि वहाँ के लोगों को कितना मेडिटेशन में रुचि है। One thing that I feel is that this online service has come to stay for the Brahmins. What I mean is that even if the COVID goes, it has to go, we will continue to do normal service with people present there, but also online at the same time. I think we are going to do both things at the same time, because it's a wonder. For instance, when we stream a meditation, there are people from South America listening, and it's wonderful. Same feeling here, brother, same feeling. Good thought. तो मुझे ऐसे फील होता है कि भले कोविड जाएगा एक न एक दिन, तो उसके बाद भी जो अभी हम ऑनलाइन में सेवाएं कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमने जैसे अनुभव किया कि अभी जब हम प्रोग्राम करते हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, साउथ अमेरिका से कोई सुन रहा होता है, तो भले कोविड जाएगा एक दिन, नॉर्मल होगी सब कुछ, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं तो आगे चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि ये लगता है कि बाबा का कोई ना कोई युक्ति है, दूसरे प्रकार की सेवाएं बाबा जो करा रहा है। The other good thing is that with the Brahmin family, we are closer than ever. We connect with so many countries, with so many seniors, brothers and senior sisters. For instance, in Spain, every Saturday, we have one senior, like Sister Genti or Maureen, reading the Murli for the whole of Spain. So we are very much connected. तो जैसे अभी हम अनुभव करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो भी सिचुएशन सामने आया, लेकिन हम सभी जो बाबा के बच्चे जो पूरे वर्ल्ड में हैं, पूरे विश्व में हैं, हम सब जुड़ गए हैं। हम देखते हैं कि कैसे यूरोपियन देशों में कभी सुदेश दीदी, कभी सिस्टर मोरिन, कभी सिस्टर जयंती लोग क्लासेस करा रहे होते हैं। तो ज्यादा और भी बाबा का जो फैमिली है उससे नजदीक आने का मौका हमको इससे मिला है। So we don't need to have any dislike for the COVID, because this virus has brought some benefits. And someone told me that someone had an experience that the virus was talking to him and telling, don't do tapasya to finish me, because I have come for certain task. Don't do tapasya. तो जैसे कोरोना आया हो तो उसमें कुछ पॉजिटिव साइड भी हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे एक मजाक में एक बात है कि एक भाई योग कर रहा था, कोरोना जल्दी फिनिश हो जाए, लेकिन कोरोना उसके पास गया, कोविड, और कहा कि ये मेरे जाने के लिए आप योग नहीं करो, मैं कुछ पर्पस के लिए आया हूँ, तो कुछ काम है तभी तो मैं आया हूँ। Do your tapasya for other things, but not to eliminate me. आपको योग करना है तो दूसरी चीजों के लिए आप करो, मुझे खत्म करने के लिए, मुझे फिनिश करने के लिए योग नहीं करो करके ऐसे कोरोना वायरस ने एक भाई को बताया। ऐसे उसको थोड़ा अनुभव हुआ, आभास हुआ। Isn't amazing that a virus that is something so small is more powerful than any government of the world? अभी हम देखते हैं कि कैसे कोरोना वायरस दिखता है नहीं, कितना छोटा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कोई भी गवर्नमेंट से भी ज्यादा वो पावरफुल बन गया है आज की डेट में। Who has the power to tell the whole world to stay at home? किसकी ताकत है जो बता सके पूरे संसार को कि आप घर में बैठे रहो? There is no human being that can order the whole world to stay at home. कोई भी व्यक्ति में, कोई भी इंसान में इतनी शक्ति नहीं है जो बता सके कि घर पे बैठे रहो। But a very small virus has been able to do that and many more things. तो केवल एक वायरस में इतनी शक्ति है जो सभी को घर पे बिठा दिया। Any other thing you want to know? Well, regarding the family, the Brahmin family, the Spanish family, I would say that they are the speciality of Brahmin souls in Spain. They are very cooperative,
there is a, I feel there is a very good unity in the whole of Spain. There are no like divisions or, no, you know what I mean, divisions, different areas that could happen, but no, there is a very good unity. तो मैं बाबा का जो परिवार है स्पेन में बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा एकता है, सहयोगी है सभी, तो सभी मिलकर के अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सेवाएं भी कर रहे हैं. And let me know if you want me to share anything else. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं ताकि मैं आंसर दूं, बता सकूं, नहीं तो पूरा कर दें. If we compare Brahmin family, then sisters are more than brothers, or brothers are more than sisters in Many Spain? more sisters in Spain. Many more sisters. Like India. Like India, everywhere. same. Well, I don't know. तो स्पेन में भी बाबा के So- बच्चों में बहुत ज्यादा बहनें हैं, जैसे भारत में हैं, तो बहनों की संख्या वहां पर ज्यादा है. So, are you at Barcelona No, right now? I'm in Madrid for the last. Madrid is the capital of Spain. Okay. For the last Yeah, 5 yeah. years, I'm in Madrid. I'm in Baba's Okay. house, and this is a brother center as something different. This is a brother center because it's my brother, Okay. my lucky brother Enrique is here, myself, and another brother who's called Antonio, and it's interesting because there must be some influence, and here in this center there are more brothers than sisters. The other day we were in the Murli, 8 or 10 of us, and everyone was brothers. तो There तो are some जिस sisters, but more brothers in this center. सेंटर पे मैं रहता हूँ, ये भाइयों का सेंटर है, बहनें भी है, लेकिन मैं और मेरा लौकिक भाई है रिक, और दूसरा एक एंटोनिया करके भाई है. बहनें भी, लेकिन ये जो सेंटर के निमित्त हम सेवा यहाँ पर करते हैं, हम भाई है. मैड्रिड, स्पेन का जो कैपिटल सिटी है, मैड्रिड में अभी फिलहाल भाई वहां पर 5 साल से रह रहे हैं. And now that the latest news is now that they have closed the region, so we cannot go from Madrid to Barcelona, for instance, at least during 15 days. And they have set up they call it the state of alarm. I don't know if it is like this in English, alarm state, in which they want to extend for several months, but it's not clear what will be the restrictions. By now, we cannot go to other cities, and we have to be wearing masks all the time. And and there is this restriction of from 12 night till 6 in the morning, no one can be in the street, you know. तो जैसे वहां पर जैसे हम देखते ना, यहाँ पर रेड अलर्ट है, वहां पर जैसे अलार्म का मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी नहीं जा सकते हैं, जहां पर है वहीं पर रहना है, मास्क पहनना है, रात को 12 बजे से मॉर्निंग 6 जैसे कहीं जा नहीं सकते हैं. I don't know ऐसी if you have, सिचुएशन अभी भी वहां पर sorry, रिस्ट्रिक्शंस हैं कोरोना वायरस की वजह से. I don't know if you have anything like that at night. Yeah, here No. also depending upon the cases, they have made certain restrictions. You know, some cities like that. Yeah, depending on the conditions of the particular city, they have made restrictions and rules based on the cases in that particular city. It depends on the area and the city. Okay. Yeah, area or city like that. Yeah. But here there is an increase in Spain, quite a strong increase in cases. So they want to take tougher measures and Yeah, अभी restrictions. स्पेन देश में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए बहुत ही रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इधर उधर जा नहीं सकते हैं, बहुत ही रूल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. So who knows if we will meet in Madhuban? I think it's not very easy, no, for the next year, at least for the first months. मुझे ऐसे It's लगता not very है clear. या मधुबन आना जाना इतना भी इजी नहीं है, लगभग 1 साल तक या कुछ 6 महीने तक. देखते हैं ड्रामा में क्या होगा.
Do you have Yeah. any news about that? Do we know anything? No, no, no news. No news is good No news. news. It's good. Yeah. Well, thanks, Savita, for your work. No, no, Actually, thanks, Baba. Thanks, major Baba. programs are not being organized right now in Madhuban. Very small groups are possible, but Okay. no major programs, no major nothing. So one kind of lockdown. Anyway, brother, will you please introduce all brothers who are there right now at center? All the Okay. They are not in the center now. okay, no, One has just left, and okay, the other, I think he's in a meeting. Let me see. Let me check. okay. सविता बहन बाद में डॉक्टर साहब भी हाजिर है तो आप इंट्रोड्यूस करना क्योंकि हम नहीं कर पाए थे शुरुआत में Okay. मेरे साथियों ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्पेन जो देश है वहाँ के The other brother is in the shower, so it's not a very good time to bring him. okay, no problem. Brother, so who prepares bhog there? Because it's a brother center. There is one brother, Antonio, who Okay, is always preparing bog. But any of us can prepare bog okay, if there is a need. If there is a need, okay. some with more success and some with less, but Ah, we can do that. okay. Good. So is there only morning Murli class or also in evening also? No, we have several classes during the day, but everything online now. We Yeah. have courses online. We have Murli review online. Almost every day we have 2 or 3 things. Okay. Let's sit for meditation for 2 minutes. So please give drishti to all Kargil Bagh Fulwadi and then we will finish. Okay, brother? Thanks for your kind invitation. Thanks to Savita for translating, and thanks to all of you for coming. It's my pleasure. And thank you for your time and for your kind sharing.